HTML body, then script, text slash JavaScript, where num equals to suppose 1, then do normal program, num is equals to num plus 1, in alert, while num less than 20. Then scripting is end here. Okay, so I save the file. Do while HTML. Right click, open with Google Chrome. କାମ କଲାନି। ଏଇଟା ଏମିତି କାଇଁ ଆସୁଛି?
कौन एक प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा मैं स्क्रिप्ट स्पेलिंग ठीक अच्छे ना। बॉडी बॉडी एंड ठीक अच्छे। स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू एल ओ ए एल ई सॉरी ए एल ई आर टी अलर्ट। ओके 1 + 1 2 है 5 6 7 okay so 20 data end है the next move there are suppose एठी 30 पास करूची 30 माने my condition is false okay my condition is false here so 30 is less than 20 so 30 plus 31 है ताले at least one time the statement execute है बुझेला माने यदि do while loop रे यदि मोर condition false होची तो at least one time the statement is execute clear बुझेला आज्ञा सर आज्ञा next is for loop so for loop contain the three part same program I'll perform here so I remove all this part var I is equals to 10 for var I is equals to 10 then I less than less than equals to 20 then I is equals to I plus 1 then alert I for loop dot html okay so var I is equals to 10 10 less than 20 condition is true it is printing you 10 then 10 plus 1 11 so this is continue up to 20
Okay, 10, 11, 12, 13. Okay, up to 19, it is display you. Clear? बुझिए लाइट है? समझ में आया? ये हो गया, हाँ? ये हमारा प्रैक्टिकल भी हो गया कर लिया, कब किया? पहले ही। टाइमिंग तक का हो गया। Then now we are using the break and continue statement. Okay, so break and continue, break statement is used when you are using a looping, then at the specific condition, मतलब एक specific condition में आप अगर आपका लूपिंग को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हो तो एट दैट टाइमिंग वी आर यूजिंग व्हाट ब्रेक स्टेटमेंट. सो ब्रेक स्टेटमेंट कब अपेयर होता है? जब कोई कंडीशन आप यहाँ पर देते हो लूपिंग में, वो कंडीशन अगर मेट हो जाता है और ट्रू हो जाता है तो यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट आपका अपेयर होता है. तो नाउ here suppose I start here 10, var is equals to 10, देन यहाँ पर मैंने while लूप यहाँ पर डिफाइन करता हूँ. while var is less than equals to 20, then it is execute. Num is equals to num plus, then if num is equals to 15, then we're using here break. Break dot html.
इसमें सेव किया brek.html. स्पेलिंग गलत है क्या? Oh, sorry. Okay, 11, 12, 13, 14, 15, 15 के बाद क्लोज हो गया. Okay, so it is what? Break the statement. Okay, clear? Ramajit, Sagar, Yes, sir. Again, sir. Yes, sir. then next we're using continue statement. Continue means you have to skip the element. So this code is saying you that those are the number is divisible by 3, it is skip that element. Okay, so we start with another program. पर एक ले जाते हैं. Here I is equals to 1, I less than 10, I less than 10, then I plus plus. If I modulo 3 is equals to 0, then now continue. Then num is equals to num plus 1.
then alert is equals to then file save as continue dot html. Okay, so सर 9 भी दिखाना चाहिए था ना, 3 भी दिखाना चाहिए था, 3 नहीं 6 and 9 तो दिखाना चाहिए। just a minute. वन टू थ्री फोर सब दिखा दिया, 6 में एंड हो गया। ये हो गया I is equals to 1, 1 is less than 10, इस कंडीशन ट्रू, condition is true, 1 modulo 3 is equals to 0, 1 4 रिमाइंडर 0 हो जाएगा, हाँ सर 0 तो आपको दिखाएगा 1 दिखाया है। कुछ गलत हुआ है कहाँ पर। सर हम आई वहाँ पे डिफाइन किया, लेकिन प्रिंट के लिए तो उसके बाद आई कुछ नहीं है ना क्या। रुको इसका कंडीशन थोड़ा गलत, भ्यार नॉम इज इक्वल टू 0, ये जरूरी नहीं है, ये क्यों डिफाइन करेंगे। अगर हम सिर्फ आई को प्रिंट करेंगे तो होगा। वन टू थ्री स्किप हुआ, जो 3 मॉडुलो 3 0, 5 6 स्किप हुआ, 8 9 स्किप हुआ। क्लियर रोमेजित, मतलब वो आज्ञा सर। सागर, ओमकार, Yes, sir. Clear, sir. I Yes, sir. I is 1 is less than 10, condition is true, 1 modulo 3 is equals to 0, no, so it is printing you I means 1. Now I value is increment to 2, 2 is less than 10, 2 modulo 3 is equals to 0, condition false, so it is printing you 2. Now I value is increment to 3, 3 modulo 3, remainder is 0, yes, then continue means skip, 3 skip हुआ, then 4 हो गया, तो 4 लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू, 4 मॉडुलो 3 इज इक्वल टू 0, फॉल्स। ओके, तो यहाँ पर 4 प्रिंट किया। ओके, जो डिविजिबल है उसको स्किप किया है उसने। हाँ, जो डिविजिबल बाय 3 है उसको स्किप किया, इन बिटवीन 1 to 10। ओके, वहाँ पे अगर 100 देंगे तो 100 तक का दिखाएगा, कहाँ पर? अब अगर 10 का जगह में 100 देंगे, हाँ 100 तक जाएगा। There is a continue statement, break and continue. Then basically function work is what? A function is a self
content block statement that has a name. Function can be executed whenever the same code is required to perform repeatedly at a different location in a script. मतलब एक सेम कोड को आप अगर डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम आपका जो HTML में इसको यूज करना चाहते हो, देन वी आर यूजिंग फंक्शन. Function is created as separate module with the name attached to it. Each function can have several statements within it. When a function are used, you can easily detect the error in the script by comparing the expected result of the execution for each function with the actual result of execution. If the result differ, it means that there is no error in the code. Okay. Function basically it is of two type. One is some built-in function, another is user-defined function. आपका जो complex program है उसको छोटा छोटा पार्ट में वो कन्वर्ट करता है और वो रियूजेबल पार्ट ऑफ द कोड है. मतलब एक बार आप इसको यूज करो और जब भी आपका ज़रूरत होगा आप उसको कॉल कर सकते हो. एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट ना, इट इज breaking the complex program into a smaller part. A function is a self-contained block of statement that has a name. It can be executed whenever the same code is required to perform repeatedly at the different location in a script. A function is created as a separate module with a name attached to it. Each function can have several statements within it. When a function are used, you can easily detect the error in the script by comparing the expected result of the execution. In other words, the function make your code as a modular. It make a complex program into a smaller unit. So this function is of two type. One is built-in function, another is user-defined function. तो दो तरीका का आपका फंक्शन रहता है. तो बिल्ट इन फंक्शन में क्या क्या रहता है ना, वन इज नॉन फंक्शन, पार्स INT फंक्शन, पार्स फ्लोट फंक्शन, evaluation function, prompt function, and confirm function. So these are the different built-in function we have. Okay, which is predefined function we have. Each none function determines whether the parameter is not a number. This function return true if the parameter is not a number. Okay, मतलब आप जो भी string पास करोगे, सपोज norm1 is 2000, norm2 is 8000, तो रिजल्ट इज नॉन norm1. तो इज नॉन norm1 आपको क्या करेगा ना, चेक करेगा द norm1. अगर आपका इंटीजर वैल्यू नहीं है तो वो रिजल्ट आपको दिखाएगा. तो रिजल्ट अलर्ट रिजल्ट इन इज नॉन norm2. In the preceding code, it create a variable norm1, assign the value 2000 which is present in a string to it. It also create a variable norm2 and assign the value 8000. Is none function evaluate whether the variable norm1 and norm2 contain the numeric data or not. As the value in the norm1 variable is a string, is none norm function it return true. So the norm2 numeric, so that the function will return false. So second में आपको false दिखाएगा, first में आपको true दिखाएगा. Okay, so that is the work of is none. Parameter is not a number. तो this parameter is not a number. So पहले में ये true दिखाया, second में ये आपको false दिखाएगा. Clear? सागर, रोमेजीत, ओमकार. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then next is parse INT. Parse INT function parse the string parameter and return the corresponding integer. If you pass x equals to 5, now 5 is what? It is a string, but we are storing a integer value. मतलब string है लेकिन वहाँ पर numeric value है, उसको आप convert कर सकते हो integer में. So for converting that, we are using the parse INT function. So by using parse INT function, it convert to integer value. Okay. Sagar, Omkar, Yes, sir. Yes, sir. Romejit, Yes, sir. Romejit বুঝ পাইলা এটা?
आज्ञा सर तापर होची parse float. The float function takes a string parameter and return a floating point number. X equals to 6.2. If you want to convert it into a float, we're using y equals to parse float. So it is converting a into a float value. Okay. So these are the different functions we're using. In the next class, I will show you the practical of this predefined function, and we move to the next. Okay. आज्ञा सर Yes, sir. चलो. थैंक यू सर Thank थैंक you, यू sir. सर डिस्कॉर्ड इंस्टॉल करे ना ना, ମୁଁ ଆଜି କରିବି